जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। आज मेरे साथ हैं राजा मुनीब साहब, जो हमको एक थोड़ी सी डरावनी सी चीज बताएंगे, बट ये चीज हमको समझनी पड़ेगी। एक जो चीज कश्मीर में हुई थी, ठीक है, लोगों का थोड़ा सा जिनको बहलावे में डाला था, they were kind of pushed into one side, and they were pushed into one side using something, किसी चीज को यूज करके किया था लोगों को, यू नो जो बोलते हैं ना, दिमाग गुमराह करने की जो कोशिश की गई थी, आज वही चीज हमको दो तीन जगहों में होती हुई दिखती है, नेमली पंजाब। एंड आपको दिख ही रहा होगा, अभी तो फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, एंड अ लॉट ऑफ अस नो दैट द उड़ता पंजाब की स्टोरी। तो आज जरा उसकी भी थोड़ी बात करते हैं, टू ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि ये जो पंजाब में आज डिसइल्यूजनमेंट है, हाउ फार इज पाकिस्तानी ड्रग्स responsible for this situation. So, namaskar once again. Thank you so much for coming to the channel. Always a pleasure talking to you. Thank you, Adi. एक बार, Pleasure is why mine. don't tell us what is this game? Because कश्मीर में हमने ये देखा था कि बहुत सारे ड्रग्स आए थे, एंड उसके बाद टेररिज्म लिटरली पिक्ड अप, एंड जो लोगों का डिसइल्यूजनमेंट था वो भी बहुत ज्यादा हो गया था। क्या ये जो प्लेबुक कश्मीर की है, पाकिस्तानी ये जो आईएसआई हैं, ये पंजाब में कॉपी पेस्ट कर रहे हैं सर? एब्सोल्युटली आदि, देखो अगर आप कोई भी टेररिज्म या टेररिज्म रिलेटेड इंसिडेंट्स उठाओगे या कोई भी आप उसका बैकग्राउंड उठाओगे ना, यू विल सी वन थिंग वेरी कॉमन, विच इज drugs are the driving engine for such kind of activities to further them into, to push them further. पंजाब में हम बहुत टाइम से उड़ता पंजाब की स्टोरी सुन रहे हैं, राइट? तो बेसिकली अगर आप ड्रग्स का देखोगे कि इसका इफेक्ट किस पे आता है, इसका इफेक्ट मैक्सिमम यूथ पे आता है। किस यूथ पे आता है? एज बिटवीन 14 टू 25, 26, 30, अर्ली 30s तक आता है। नाउ दिस इज द मोस्ट प्रोडक्टिव माइंड यू हैव, दिस इज योर प्रोडक्टिव कैपिटल you have. And if you incapacitate this capital, then what are you left with? You're left with nothing. तो पंजाब में जो ये डिसइल्यूजनमेंट हम देख रहे हैं बहुत टाइम से, इसके पीछे रीजन क्या है? पंजाब में पैसा नहीं है क्या? पंजाब में खेती नहीं है क्या? पंजाब में इंडस्ट्रीज नहीं है क्या? एवरीथिंग इज देयर इन पंजाब. But then why is Punjab so disillusioned? The disillusionment comes from, you being addicted to drugs and you losing your way, you losing your path, you losing your future, and you then start of believing into all sort of narratives which are pushed to you, all sort of nonsense which is pushed to you, and you actually start believing and trading into them. क्योंकि उसमें आपका कहीं ना कहीं जाके फिर इंटरेस्ट भी होता है, राइट? तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये कहें कि the boys are pushed to think a certain way, and since they are drug dependent, it is very easy to push them to think something and to act on that thing only. It's very easy to influence the mind negatively and keep on talking negative things all the time, and just reinforce it with whatever drugs or medicines or what any kind of addiction you push through. It makes them more and more incapacitated in terms of their thinking. Anything, if you want to control, you have to control the mind. How do you control the mind? You control the mind by taking it over, by taking its control. And how do you do that? The drug is the easiest and the cheapest thing to do that. तो एक बार अगर आपने वो माइंड जो है, एक थिंकिंग माइंड जो है, उसमें से थिंकिंग आपने अलग कर दी, और एक जॉम्बी माइंड जिसको हम बोलते हैं कि एक माइंड जो सोच नहीं सकता, जो केपेबल नहीं है, जो डिपेंडेंट है, उस पे रहे, तो ऑब्वियसली फिर जो आप रिजल्ट चाहते हैं वो आप अचीव कर सकते हो। और पंजाब एंड कश्मीर बोथ, we have seen over the years that how drugs have negatively influenced the place, how they have played a large role in terrorism, in fueling terrorism, in fueling separatism, in fueling anti-state narratives. It has a huge role to play, and people who say that no, this is not true, are actually not being honest and not being truthful about it. So पंजाब का भी वही हाल है, कश्मीर का भी वही हाल है, ये टेक्स्ट बुक है, एंड आईएसआई हैज ऑलवेज यूज्ड दिस टेक्निक. अब आप कश्मीर का हाल देखो, ड्रग एडिक्शन का, कश्मीर में इतनी ज्यादा ड्रग एडिक्शन है, तो द एडमिनिस्ट्रेशन इज ट्राइंग देयर बेस्ट. They're cracking down on peddlers. They have opened up rehab centers. Now even the society has started talking about it. पहले तो ये था ना कि नहीं, हमारे घर में हम अगर हम बात ही नहीं करेंगे इस बारे में. They lived in denial. Now people have started talking about it. But then once your generation goes through drugs, it's a finished generation. There is no future hope.
absolutely no hope. So obviously they will be into criminality. Criminality is the only thing which sustains drug addiction. So criminality to hogi. Criminality jahan hogi, uska next form is then terrorism. It's very easy to change criminals into anti-national acts and terror acts and carry out all these things. So it's a natural progression from criminality to terrorism is a very natural progression. Dawood Ibrahim ne bhi to wahin se start kiya tha. He Exactly. was a criminal, Petty, and then he became yeah, hey, and then he became number one wanted in India. He became a yeah. huge terrorist. So that's the textbook. मेरे को ये बताइए कि अभी रिसेंटली कल में एक दिल्ली में बस्ट हुआ था म्याओ म्याओ का 2500 करोड़ रुपए का एंड 2500 करोड़ रुपए आई मीन ड्रग्स आर एक्सपेंसिव फेयर इनफ बट 2500 करोड़ रुपए इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट Or इन meow दैट meow. It's a tablet, right? हाँ और ये इतनी सी टैबलेट छोटी सी टैबलेट होती है सो आई मीन इट्स प्रॉब्ली 2 सूटकेसेस फुल ऑफ इट और समथिंग लाइक दैट बड़े वाले वो जो स्काई बैग सूटकेसेस होते हैं भरे हुए उससे Hmm. ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है क्योंकि हम लोग ईस्ट में भी देख रहे हैं उस दिन एक ड्रग बस्ट हुआ था मेथाम्फेटामिन और केटामीन का जिसके अंदर कोई 600-800 करोड़ रुपए का एक बंदे के बाद 39-year-old चैप ही वाज कॉट इन मणिपुर विद दिस राजस्थान में भी एक दो बस हुए हैं मुंद्रा पोर्ट में एक सबसे आई थिंक द बिगेस्ट बस्ट दैट वाज सम 3500 crores वो तो was कोकेन a का था. huge I mean that was fantastic size of uh, drugs which was coming inside बट इस टाइम पे भारत की सिक्योरिटी सिचुएशन जो है दिल्ली के आसपास उसके टाइम पे ये मिलना क्या ये कनेक्टेड है जो दिल्ली के बॉर्डर्स में हरियाणा के बॉर्डर्स में जो कचरा चल रहा है बिकॉज व्हेन यू हैव अ प्रोटेस्ट ऑफ दिस काइंड यू नीड टू फंड इट एंड इफ इट्स फंडेड बाय द रॉन्ग एलिमेंट्स उनकी फंडिंग तो इसी चीजों से आती है फिर हाउ डू यू इज देयर अ कनेक्शन आपको कुछ दिखता है यहाँ पर Absolutely, there is a connection. You cannot see these two things differently. See, इसका बड़ा interesting है. This basically जो म्याओ म्याओ है, this is run by a very notorious criminal by the name of Lalit Patil, if I'm correct. या Now, Mr. Patil was arrested last year. इसका बस पकड़ा गया था, and then he was running it from a hospital in Pune. The whole thing was being run from there, and then he ran away from the hospital. He was again caught in Bangalore after 2-3 months. So this guy is very notoriously actively notoriously involved into pushing these meow meow drugs and other recreational drugs through India and has various channels to do that. But the important thing, Adi, is that most of the meow meow is produced in the Golden Triangle area. It's not the Golden Crescent. Golden Crescent, maybe Pakistanis are doing it, but not to this level and not to this quantity. जो हमने अभी तक देखा है, right? But this is very prevalent in the northeast. It comes from the Golden Triangle more. So obviously अगर आप देखोगे ना ईस्ट एंड नॉर्थ का अगर आप देखोगे पुश और इस वक्त जो है obviously the protests are on, right? एंड देयर वुड बी देखो एनजीओस का गेम तो खत्म हो गया. पहले तो बड़ा सिंपल था कि इंडिया में इतनी एनजीओस थी कि एनजीओ से दे दो और एनजीओस would then fund it in their own way and keep the things going. बट एमएचए ने 2019 के बाद जो क्रैकडाउन किया है और जिस हिसाब से एफसीआरए लाइसेंसेस भी कैंसिल हुए हैं, some very good organizations have also lost it because there is discrepancy in their funding and all that. This is the only thing now which is left. That is why we have seen so much of push of drugs coming into India from different borders. So northeast से भी अगर ये आ रहा है, there is definitely a link into it. You cannot rule that out. क्योंकि to run these kind of protests, you need substantial money. Now these are not organizations which are where are they going getting their funding from? My question is कहाँ से ला रहे हो पैसा? या आप जेसीबी हायर कर रहे हो, आप कंक्रीट बंकर्स ला रहे हो, आप ट्रक्स ला रहे हो, आप लोड्स ऑफ पीपल. अच्छा वो तो ठीक है. अब आप ये देखो आप दारू भी कितनी ला रहे हो उसके साथ. There are videos on Twitter. You can see that the way, and these are not very cheap alcohol they are drinking. That's pretty decent priced bottles. They are just you know sprinkling around, I would say, to people. So it's like a party happening on the borders. They're enjoying it. Who is funding it? Where the fund is coming from? No political party is going to fund this. No political party is openly backing it. Major national political party तो है नहीं कि उनका फंड है और वो बैक कर रहे हैं.
ठीक है, कोई एनजीओ ऐसा नहीं है कि जो इसको फंड कर रहा है, कि कोई बहुत बड़े एनजीओ हैं जो ये काम कर रहे हैं। सो कहीं ना कहीं से तो ये पैसा आ रहा है, और ये पैसा आ कहाँ से रहा है? ऑब्वियसली ये पैसा 2 नंबर से आ रहा है। 2 नंबर से कहाँ से आता है? हवाला से आएगा। हवाला कहाँ से होता है? ड्रग ट्रेड से होता है। सो दिस इज ऑल लिंक्ड। और आप ये देखो कि अगर नॉर्थ ईस्ट का ड्रग जो है दिल्ली में इस क्वांटिटी का पकड़ा जा रहा है, तो what will be the supply of the same drug in other parts in northeast and its adjoining areas? What will be going on in those areas? And what is the ultimate game plan? What are they trying to achieve? What are they trying to do? I think it is the That's biggest national security risk we are facing in today's terms when it comes to national security. We might not be realizing it, we might be calling it recreational drug, but 2,500 worth of crore of recreational drug only in Delhi. What are we thinking? All Delhi walas coming out and partying on the street? The whole population? the It's entire bloody city will be high for days. yeah, for days. For days. And you remember that nightclub wala scene also? Yeah. Last year wala wo jo pakda gaya, Yeah. right? Yeah. So it's a very organized business. It's a very organized crime, and I think it is something which really needs to look into in a much serious way than looking at ठीक है हमने एक बस्ट किया दूसरा बस्ट किया। ये 2500 करोड़ में से पहले तो पुणे में पकड़ा गया 700 करोड़ का, वहां से टिप मिला तो उन्होंने यहाँ रेड मारा, राइट? सो इट्स अ जॉइंट कोलैबोरेशन बिटवीन द दिल्ली पुलिस एंड द पुणे पुलिस। हाँ, पिछले 1-1.5 साल में 10-12 हजार करोड़ रुपए के ड्रग्स पकड़े हैं हमने, which हाँ, is 4 दिन रेड 10, चली है इसकी 2500 करोड़ वाले हाँ, की, 4 दिन 10, की रेड में हुआ है। 12,000 crores is a lot of money. I mean, I एंड इट्स hope नॉट my city, स्टॉपिंग। yeah, it's not stopping. Yeah. तो आप देखो मैं कितना पास कर रहा होगा या कितना पैसा ये लोग कमा रहे होंगे। जी, जी, जी। आपने एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग बोली कि ये जो म्याऊं म्याऊं आती है ये नॉर्थ ईस्ट से आती है। नॉर्थ ईस्ट में हमको पता है मणिपुर में क्या हो रहा है, देयर इज अ लॉट ऑफ फाइट ओवर दिस सेम ड्रग सप्लाई व्हिच टेल्स अस कि दीस इवेंट्स आर कनेक्टेड। Every event is connected in India for today's date. Look, they are trying multi-pronged approach to bring this government down. Whether जी, it is Manipur, whether it is farmers' protest, we saw that with CA and NRC. Everything was sponsored, everything was planned, everything was operating out of a toolkit. And every one of them is connected, one after another. It is not something which is randomly happening in India. It is well thought, well planned, and well executed kind of plans which are going through, which they are trying to carry out, and this is going to carry on. They will try to destabilize India, and they want to destabilize India, and their core motive is to destabilize. See, the point is Pakistan cannot, ferment a lot of terrorism the way they used to do from 1990 till about 2010, 2012, 2014 तक भी अगर हम बोलेंगे 16 तक अगर मैं बात करता हूँ, राइट? पाकिस्तान की वो कैपेसिटी जो है वो डाउन है, and the costs are higher from our side also if they try to do something. But to you know to think that okay, the Pakistanis are down means that we are going to have a relatively safe game, I don't think so, because they have devised many other ways. Now look at this Khalistan movement. I खालिस्तान। think हाँ, खालिस्तान, इनका अगर आप वोटिंग याद करोगे जो उन्होंने यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में वो वोटिंग किया था, they flew people from UK to Australia, Australia to Canada. They were flowing the same kind of, उनको जहाज में चढ़ा के ये वोटिंग करवा रहे थे। यार पैसे लगते हैं इन चीजों में, और पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी डाउन है तो पैसा कहाँ से आ रहा है, जी, राइट? या आपने सो ये डोनेशन सारा डोनेशन भी ले लियो, बट अ लॉट ऑफ द फंडिंग इज कम एब्सोल्युटली। फ्रॉम, हाँ जी, So करेक्ट। yeah, so they are playing on the Khalistan card again. They know that Kashmir is down. They will do whatever they have to do in Kashmir. It will keep on going. वो मास सपोर्ट नहीं होगा, वो मास बैकिंग नहीं आएगी, वो मास प्रोटेस्ट नहीं होगा. But then over the years, what they have done is they have successfully been able to radicalize the minds in the rest of the country. They have got enough radicalized people who are ready to, follow their diktat. And then obviously we have this huge illegal immigration problem, whether it is the Bangladeshis or the Rohingyas, which have come in large numbers and staying here. Now those buggers, I'm sorry to use that word, have nothing to lose. They're as dead in their own countries than they are here, right? And their whole point of being here is not to be progressive, not to make money, not to educate themselves.
but to create ghettos, but to create problems, right? But to create divides. And they are trying to do that. They're trying to push that. So this seems like a larger agenda to me. Like we have a 2047 plan. I think they also have a 2047 plan. By 2047, we should be doing this in India and try to, destabilize the country to in other parts of the country as well. We saw what happened in Nu in the violence. Yeah. We have recently seen what's happened in Uttarakhand. So this all is a huge national security threat, and I think what India today needs is a national security policy. We desperately need a national security policy. We Hmm. need a equivalent of homeland security what US has. यार यूएस में होमलैंड सिक्योरिटी है, वहां इलीगल घुसता है, होमलैंड सिक्योरिटी उठाती है, उसको बंद कर देती है, कोई सवाल नहीं करता. Why can't we have the same thing? We have one NIA which is acting, but then NIA, it's क्या क्या far too करेगा यार strict. वो? You are not going to track everybody. You need a certain agency, a specialized agency who will only look into illegals. And the moment you get an illegal, you pick him up, put him in a detention center, and figure out what to do with it. Hmm. Yeah, politics के लिए, we're giving them Aadhaar card also, we're giving them this also, but we are not realizing what we are doing with it. It's a ticking time bomb on us. That's absolutely true. आपने I think you've hit the nail on the head in this aspect. मेरे को जो एक दो चीज और आपसे इसके बारे में पूछनी थी, because this is a conversation I wanted to start. हमारे पास ऐसा कुछ इतना वो नहीं है, but I wanted to start this conversation for people to understand कि हम बोलते हैं यार ये तो localized event है, ये है वो. साहब कोई इस देश में localized event नहीं हो सकता. We are very globalized within our country. Everything is connected to one another. तो अगर मणिपुर में आग लग रही है, उसका बैक इफेक्ट आपको आज दिख रहा है. एंड मणिपुर में जो आपने अभी पॉपी फील्ड जलाए, ये करा वो करा, तो यू कैन सी द बैक इफेक्ट राइट देयर कि अच्छा आप ये करोगे तो आप देखो हम दूसरी तरफ आग लगाते हैं आपके. सो दैट्स समथिंग दैट Absolutely. दैट दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. एंड हम लोग ना बड़े नहीं, वो नाइव जो हो रखे हैं. लोकलाइज्ड इवेंट है ना आदि, जो लोकलाइज्ड इवेंट है वो लोकल लेवल पे खत्म भी हो जाता है जी. with the intervention of administration, with the intervention of civil society, all these things then get resolved also. डाई ऑफ. हाँ जी. Right? They die off. But these events don't die off. They keep on coming at crucial times again and again, again and again, with the perfect timing, with the perfect kind of movements. There is a pattern to it. And any blind, even a blind man can sense कि यार ये जो हो रहा है ये कोई localized event नहीं है. This has a larger picture and a larger motive behind. मैं आपसे जो पूछूंगा कि ये जो पाकिस्तान धीरे धीरे करके वीक हो रहा है, और आई मीन काफी लोग प्रिडिक्ट करते हैं कि द एंटिटी कॉल्ड पाकिस्तान सर्वाइव Hmm. करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है. इट्स बिकमिंग अ लिटिल इशू बेस्ड फॉर देम. मेरा ये कहना है कि अगर जैसे जैसे पाकिस्तान और वीक होता जाएगा, ये जो अनकन्वेंशनल टैक्टिक्स हैं पाकिस्तान की, यू नो कि आप ड्रग्स कर लो, ये क्या नाम है, टेररिज्म कर लो, मैं यूक्रेन को वेपन भेज देता हूं, मैं ये कर देता, द काइंड ऑफ स्टफ दैट पाकिस्तान डज, व्हिच इज बेसिकली अ रोग स्टेट सॉर्ट ऑफ अ थिंग. Hmm. कहीं पे भी कुछ भी कर लिया, पैसे कमाने हैं. अभी इसराइल को भी वेपन बेच रहा है बाय द वे. पता है आपको ग्रेनेड जो इजरायली यूज कर रहे हैं, दे हैव Artillery ऑलरेडी shells दी मेड है इन ना. पाकिस्तान ऑर्डिनेंस. तो हाँ हाँ, artillery shells दी है. जी. नहीं US नहीं ran out of it, Pakistanis. नहीं 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 नहीं, ग्रेनेड. Israelis, they've अच्छा. given grenades, hand grenades. हाँ. So Amazing. So this is, I call this a rogue country which also deals in with terrorism and all that stuff. क्योंकि देखिए जैसे जैसे पाकिस्तान वीक होगा, how do you think this thing will go forward? क्योंकि पाकिस्तान this की जो will आर्मी का डिपेंडेंस रहेगा ऑन नंबर 2 पैसा will even grow. एब्सोल्युटली. सो जितना पाकिस्तान आप देखो politically तो वीक है ही है वो, बट जितना वो जी. डिस्टेबलाइज होते जाएंगे, they have to ease off that pressure somewhere, right? And it's a dangerous game. So the more they destabilize, the more they will try to up their ante on these activities for them to survive within the country for their own political narrative. One, also in the eyes of the world, they have to survive saying that we can be extremely dangerous to the rest of you. Somewhere Pakistan reminds me of Sierra Leone. Somewhere there is Yeah, that is a sort of, that is how I see Pakistan
going forward. But look, to expect this game to stop from Pakistan is not going to happen. Oh, पाकिस्तान में absolutely. कोई अतातुर्क नहीं आ रहा, राइट? कोई मुस्तफा कमाल नहीं आ रहा, कोई अतातुर्क नहीं आ रहा जो उसको बिल्कुल रैडिकली चेंज कर देगा, लिबरलाइज कर देगा, एमबीएस नहीं आ रहा, बिकॉज पाकिस्तान में वो स्कूल ऑफ थॉट अभी है ही नहीं कहीं पे, ना ही वहां कोई ऐसा लीडर दिखता है. इमरान इज इक्वली रिग्रेसिव, मोर तालिबानी देन द तालिबान themselves. The only hope Pakistanis have, right? So it is going to be a dangerous game. It is going to be something, because that is how Pakistan ultimately blackmails the world. That is Pakistan Yeah, shows its relevance to the world. This is what our relevance is. And sadly, most of the countries are in this game and they need Pakistan. Whether we might agree or disagree on this, but they do need Pakistan to run this kind of crap. This is the only crap factory which produces such quality shit, right? So I'm sorry, but that's true. no, no, And you're this, absolutely right. You're and absolutely right. right. So that is the problem with Pakistan. So Pakistan is a problem. It is going to be a perennial headache for us. It always has been. It still will be. But इसमें problem ये है जो पाकिस्तान का larger narrative है with the game Muslim Brotherhood is playing across the globe right now. That is something to watch out for, because it is not Pakistan alone. It is China, it is Pakistan, it is Iran, it is Qatar, it is Turkey. It's a Yeah, complete geopolitical front we actually have to look at and then decide how we want to approach them. It's not easy. It's not a black and white thing. ना ये नहीं है ना कि चलो हम दो neighbors हैं, नहीं पसंद है, दरवाजा बंद करो, चलो आगे दीवार बना. Geopolitics doesn't work like that. We have interests, we have so many things in common, we have so many things we differ on. So we have to find working relationships with all these countries, at the same time safeguard ourselves from the nonsense they are throwing on us all the time. that's true. And That's that's the very true. problem. Very true. You know, as far as drug control is concerned, इसका जो proliferation रहता है बड़ा difficult होता है control करना, because of the way it can be transported in many different kinds, right? वो I've kind of noticed this कि लोग तो abroad ले जाते हैं. I mean, so you can imagine the kind of ease at which it can be transported. Uh, Hmm. how do you kind of look at the factor that there are international I don't know. I don't know whether I should call them governments or international entities that will be ready and willing to do this. For example, China. Every country has its own, you can say, Dawood Ibrahim, who peddles drugs for them from one sector to another sector, right? It's a, I remember our last podcast, I said it's a parallel economy of the world. Yeah, yeah, And they do have what you call, you know, you can call them a parallel. I don't know if the government is not the right word, but I'll have to find a different word for it. They do run a parallel system, I would call it. They run a parallel system of running their own things. So whether it is China, whether it is Myanmar, whether it is Pakistan, Afghanistan, Iran, any country, they have these collaborations where they move drugs through their borders pretty easily. अब ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा pressure भी होता है, and you have to show the world that it's not hitting your borders too much. It is not destroying your own country too much, because once the inflow is there, obviously you'll have users. In Pakistan देखो हाल क्या है, right? oh, So and then you have rival gangs, rival gangs. अब ठीक है, अगर Chinese gangs operate कर रहे हैं या पाकिस्तानी gangs कर रहे हैं, तो कहीं American gang का भी interest होगा, वो भी निकाल रहा होगा, right? Some Indian would also be involved somewhere, वो भी कर रहा होगा. So you yeah, start taking off your rivals into this and start taking them on, and start telling them कि ये हमने पकड़ा है और इतना पकड़ा है और इतना पकड़ा है. But आप sustain इसको कैसे कर रहे हो? आप इसको sustain तो economically you are sustaining all your covert operations through drug trade, whether yeah, it is weapons, whether it is supplies, whether it is recruitment, whether it is narrative building, whether it is something. Majority of them, it is whether it is lobbying somewhere, majority of it is happening through narco trade, artifacts, narco, and all these trade. So this is all linked up, and all these syndicates, global syndicates are there, right? So ये सारा जो syndicate है, ये बहुत बड़ा syndicate है. इसको ऑपरेट करना इज, मैं ये तो कह रहा हूँ, उसको देख लो आप, ललित पाटिल को देख, oh yeah, who the guy who has been running this trade for a long time.
It's ridiculous, and the kind of backers that these guys have got also is very very ridiculous. So to summarize this, to the audience, मैं एक ही चीज बोलूंगा, हमने एक कनेक्शन ड्रॉ करने की कोशिश करी है बिटवीन द रॉट इन पंजाब एंड जो रॉट एक 80s 90s के अंदर था कश्मीर के अंदर, एंड हमने उसी कनेक्शन को वी टेकन इट टू द नॉर्थ ईस्ट एंड शोन यू even the drug peddlers think Bharat is a single country. Jokes apart, that there is a connection of Manipur in this entire game. क्योंकि अगर ये इतना बड़ा क्वांटिटी में म्याओ म्याओ अगर वहां से पकड़ा जाता है, दैट टेल्स यू कहां से आ रहा है ये. इट इज कमिंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट बिकॉज इस रीजन के अंदर वहीं से आता है ये, as sir has mentioned. So this is not a singular base कि भाई ये सिर्फ पंजाब में हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है. पूरा इकोसिस्टम है एक जो जो इसको फंड कर रहा है, और जिसके लिए प्रोबेबली ये ड्रग्स जो दिल्ली में थे, ये प्रोबेबली उसी के लिए होंगे कि यार काफी टाइम बैठना पड़ जाएगा, थोड़े उधर पे ड्रग्स रखो, वो बिकेंगे तो थोड़ा कुछ रोटेशनरी पैसा आ जाएगा. और इनको सो ट्रांसपोर्ट करना भी इजी है ना आदि, ये इतनी इतनी सी तो टेबलेट्स हैं, राइट, एज कंपेयर टू कोकेन व्हिच यू गेट इन अ, you have to, basically, which is much difficult to transport and easier to catch, right? ये तो इतनी इतनी सी हैं, ये एक सूटकेस में आ जाएंगी. वो सूटकेस आपने ट्रक में कहीं भी डाल दिया, भरे हुए ट्रक में, तो कहाँ ढूंढोगे उसको? स्मेल में भी नहीं पकड़ी जाएगी, डॉग स्निफर भी नहीं पकड़ेगा इसको. कैसे पकड़ोगे? उसकी तो स्मेल तो ही नहीं है कोकेन तो कोई. पकड़ लेगा. अब डॉग हैज टू बी ट्रेन्ड इन दैट पर्टिकुलर थिंग ना. डॉग को आप पहले कोकेन दिखाओगे तो उसको समझ में आएगा ये कोकेन है, इसको मेरे को पकड़ना है. उसके ये अंदर थोड़ी पकड़ना है. कंप्यूटर लगा हुआ है. Because the kind of the variations in drugs that you're seeing nowadays, I mean, I don't know what this meow meow is. मेरे को पता है एक टैबलेट है ये है. Back in the day, I mean, I दिल्ली में मेरे को पता है ये जो ये मूवी स्टार्स के साथ में ये जो पूरा कचरा हुआ था, LSD एक्सटेसी एंड ऑल दैट स्टफ यूज्ड टू बी हाँ, अवेलेबल. एक्सेसी वो तो बड़ा कॉमन था ठीक है. कि चलो ठीक है, रिक्रिएशनल लेते हैं, एलएसडी लेते हैं, ठीक है. एक्सटेसी लेते हैं, उसकी एक वैल्यू थी. तो वो सब था, मेरे को पता है. आई काइंड ऑफ आई नो दैट दिस यूज्ड टू एग्जिस्ट. अब आप देख लो फ्रॉम where I got the information, let's say about 10-20 years ago, today the kind of stuff is also expanding. So this the thing just expands, the entire thing opens up even further. अब आप ये देखो ना, यूएस का हाल देखो. लुक एट द स्टेट्स लाइक कैलिफोर्निया एंड अदर्स. Actually, अच्छा, वहां पे देखो actually, आप, इलीगल इलीगल इमिग्रेंट्स का हाल देखो आप. How they are letting the immigrants come in because their population is not well enough now to even work for themselves, right? So have they, under that garb, now they have opened everything for illegal immigrants. and वही तो illegal ये सेम immigrants ही मॉडल. drug trade कर रहे हैं वहां पर. हाँ, और वही ड्रग ट्रेड कर रहे हैं. सेम मॉडल. सो तो बेसिकली आपको क्या लगता है ये इनका प्लान क्या है? वही रॉटन सोसाइटी, लोगों को पता ही नहीं है हो क्या रहा है, उसके बाद जो मर्जी rotten करेंगे हम divided सोसाइटी के साथ. society, criminal society, rotten divided criminal unsafe society, not a growing India, not a focused India, you know. A rotten society, a criminal society, South American Latin country जहाँ पे क्राइम बहुत हाई है, फिर इन्फ्लेशन हाई हो जाएगा, फिर गवर्नमेंट्स जो हैं वो उतारनी चढ़ानी बड़ी आसान हो जाएंगी. मेक इट अ रो क्लाइंट स्टेट, और क्या. वेरी डेंजरस एंड अ वेरी वेरी डिसहार्टनिंग थिंग आपने जो बताई है. बट आई मस्ट से थैंक यू सो मच. आपने जो पिछली बार एपिसोड किया था मेरे मेरे साथ, उसके बाद से आई बेसिकली बीन थिंकिंग अबाउट दिस. एंड आपसे मैं जब ऑफलाइन बात कर रहा था, आपने जो मणिपुर का कनेक्शन दिखाया है, I think that is brilliant. Nobody has spoken about this. I think Dev Talks and you especially would be the first person to talk about this. Always a pleasure, sir, talking to you. And हमारा थैंक यू. हमेशा जब भी एक शो होता है, हमारा आधे आधे पौने घंटे का शो होता है, लेकिन 15-20 मिनट हमारी ऑफलाइन बात होती है, which is actually more interesting. I wish someday the audience can actually hear that. Thank you so much. It's always a pleasure थैंक यू. talking to you. Jai Bharat. सेम है. थैंक यू सो मच. जय हिंद.